So now let me welcome Mr. Anirudh Dadhich, who is a practicing chartered accountant, having a vast experience of 10 years. He'll be taking us through the taxation aspects, and I hope your questions are going to increase because everyone is interested how much we are saving. So over to you, Anirudh Dadhich. Thank you, Shaz, for praising me so much. I would also thank to Mr. Deveji and their team for supporting me and our budding intellectual person and bringing them on one platform. So now, as Hanumanji told us, we understand where to buy a house, when to buy a house. Now, now onwards, we are going to understand what are the tax implications if we buy a house. So I must say, buying a house is hitting two birds with a one stone, as it it not only create an asset to you, but also brings some tax savings in your pocket. In a broader sense, we are going to understand this topic. So the first we move to our income tax, that is direct taxation. In this, we calculate what is our income from house property and what are the deductions and benefits we are deriving from the government and what government is providing to us. So for considering our income as a income from house property or income from our home, there are some prerequisites, that is land and building apparent there too. Assessee must be the beneficial owner or the deemed owner to this. All types of properties are taxed under the head of income. Either it is a home, either it is an office, either it is a shop, or some property which is on which there must be a building. So considering these prerequisites, we come to the point that there's the properties will be classified under two categories. That is, either we are going to purchase property for our own residence, or for as a for or property as an investment. So if the property gets self-occupied, then government is giving us deduction of rupees 2 lakh maximum amount of as interest if we borrowed a capital, if we borrowed a loan from any bank or any other person. If हाँ शरद जी एक बात कीजिएगा. जी जी जी. I think there is an issue. We are on the same page. Okay, no issue. So the self-occupied property, government is giving us we can avail the benefit of interest paid by us up to rupees 2 lakh. And on the let out property, the same will be the benefit. कुछ technical issue है क्या? Sure, sir. We are on this like right now we are on the deemed owner slide. I hope you're seeing it. Yeah. Yeah. Okay. So if we buy a property, considering for our tax benefit, we transfer the property or buy a property in the name of our spouse or minor child. Then it is also considered as property owned by us, not by the, because there is an inadequate consideration to spouse or minor child. Some other instances are holder of imperitable assets, member of cooperative society, person in possession of property through attorney, person having a right in property for not less than 12 years. That is why maximum lease are of 10 years or maximum to 11 years, not more than 12 years, because they make the tenant as a deemed owner of that property. Moving to other side, Shad sir, आगे कीजिएगा. हाँ, moved. Move. ये done हो गया. For self-occupied properties, government has given us an advantage that from financial year 1920 we can consider two house properties as our self-occupied properties,
else earlier we have to consider only one property. We can consider only one property as our self-occupied property. Done. Now we are going to calculate how we derive our income from house property. First, we have to calculate gross annual value, that is the property, what a property fetch as rent. For self-occupied, it is nil. For let out, it is rental received. Then we reduce our property tax from this. Government has given a benefit of by way of a standard deduction of 30% for repairs and renewals every year. Then we deduct any interest paid on the capital borrowed by us. So there is a two portion of the deduction. One for pre-construction period, second one is for post-construction period. For pre-construction period, we will get benefit of once we get the occupancy certificate or project is completed in 5 equal installments starting from the year in which construction is completed. Secondly, for post-construction period, we are giving a benefit, government has given a benefit as rupees 2 lakh or actual interest paid, whichever is lower, if construction is completed within 5 years. Else, maximum limit of availing deduction is rupees 30,000. After deducting interest and other things, the amount arrived is our income from house property. So let's take an example. If we how it is bring tax saving or how it is healthier to our pocket by for taking a loan. Let's understand an example. If a person is earning rupees 12 lakh, if a person is earning rupees 12 lakh per annum, then how it will bring saving to her pocket. So when we calculate as per old regime tax structure, on first 2 lakh 2.5 is exempt, then up to 5 it's a 5%, and then 20, then 30. The total amount for tax is approx 1.72. So 1.72. And once we buy a home loan from any bank or or some other person to buy a property, तो होता क्या है कि आपका जो है करीब करीब 3.5 लाख रुपए का आपको एक डिडक्शन मिलता है, 2 लाख का आपको मिलता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिडक्शन, और आपको 1.5 लैक्स का डिडक्शन फर्दर मिलता है अंडर सेक्शन 80EE ए, जो कि सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत मिलता है, बाकी किसी को मिलता नहीं है। और अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग के पैरामीटर्स में फॉल कर रहे हैं तो ही आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो कैलकुलेशन अगर अपन करते हैं तो करीब 3.5 लाख का आपने वो बेनिफिट लिया, दैट रिड्यूसेस योर इनकम फ्रॉम 12 लाख टू 8.5 लाख। दैट इज आप 30% के टैक्स ब्रैकेट से निकल के 20% के टैक्स ब्रैकेट के अंदर आप आ गए हैं। उसके बाद में आपको फर्दर एक डिडक्शन और मिलता है जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया अंडर सेक्शन 80C। तो जो आपने 80C में से अपन की कैलकुलेशन लेते हैं कि अपन लमसम हमने प्रीमियम पे किया 50,000 का फॉर फर्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, तो अपन ने मोटा मोटी 50,000 रुपए का पेमेंट किया उसके अंदर। तो उससे आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर आया वो 8.5 लाख, 12 लाख का इनकम, उसमें से 3.5 लाख का आपने डिडक्शन लिया, उसके बाद में आपने 80C का डिडक्शन लिया जो कि आपका हो गया 8 लाख। 50,000 का डिडक्शन लेने के बाद में वो आपका अमाउंट बन जाता है अपना 8 लाख। तो 8 लाख रुपए के ऊपर अगर अपन टैक्स कैलकुलेट करते हैं ओल्ड रिजीम के अंदर, तो आपका मोटा मोटी टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से बनता है 72,000 के आसपास का आपका टैक्स बनता है। तो आप एक 72 से निकल के सीधा आप आ जाते हैं 72,000 पे। तो दिस विल ब्रिंग ऑलमोस्ट a tax saving or inflow in your pocket of rupees 1 lakh. This is how taking a home loan is beneficial to us for the purpose of tax saving. बहुत ही अच्छा टैक्स प्लानिंग टूल है। जिसके पास भी इनकम में कहीं पे अगर 30% का स्लैब में चल रहा है वो आदमी, और वो चाहता है कि यार मेरे को टैक्स बचाना है, तो जस्ट बाय, इफ यू हैव सफिशिएंट फंड देन जस्ट बाय अ होम।
It will bring you more benefit than anything else in ATC deduct, even more than ATC deduction. अगर आप ATC के बाकी फर्दर आप किसी में क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एक होम बाय कीजिए, उसमें आपको ATC का भी बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 24 के तहत 2 लाख का मिला, 80EE के तहत आपको करीब 1.5 लाख का बेनिफिट और मिला। तो यूं करके आपका टोटल अगर आप टैक्स बेनिफिट देखेंगे तो 4 लाख का टैक्स बेनिफिट हो जाता है आपको। तो आप डेफिनेटली इसको अगर आप जाना चाहते हैं, कोई हम होम बाय करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली कीजिए। आपकी पॉकेट पे भारी नहीं पड़ने वाला है, ये आपको कुछ ना कुछ देके ही जाएगा। और वैसे भी घर हमेशा कुछ ना कुछ देके जाता है, लेके कभी कुछ नहीं जाता। खुशियां भी देता है, आराम भी देता है, कंफर्ट भी देता है। ये आपको कुछ ना कुछ देगा ही, लेगा कुछ भी नहीं आपसे। जो आपका अफोर्डेबल हाउसिंग का बेनिफिट है, अफोर्डेबल हाउसिंग के बेनिफिट जो आपको मैंने अभी आपसे डिस्कस किया 1,50,000 का, ये अर्लियर पहले फाइनेंशियल ईयर 17-18 के अंदर 50,000 का था। फिर गवर्नमेंट ने टू बूस्ट द रियल एस्टेट अफोर्डेबल हाउसिंग को एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का स्टेटस दिया। 1920 में एक बार इसको 1.5 लाख का लिमिट किया, जो कि एक बार बढ़ा के इसको 21 में किया, 21 तक इसको एक्सटेंड किया। ड्यू टू कोविड गवर्नमेंट ने इसको मार्च 22 तक इसको अभी बढ़ा दिया है। इसका कुछ कंडीशन है कि आपके पास में कोई भी दूसरा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल नेम पे। हाँ, आपका अगर कोई सन है, डॉटर है, आप उस वो मेजर है, आप डेफिनेटली उनके नाम से बाय कीजिए। उनका सब्जेक्ट टू उनका एक इनकम फर्दर होना चाहिए, तो ये उनके लिए टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टूल प्रूव होगा। A second condition है, the stamp duty value of residential house property does not exceed 45 लाख रुपीस। स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यू जो है वो आपको 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ आई होप सबको बेनिफिट हो गया होगा इसका। नाउ वी मूव टू आवर indirect taxation, that is GST applicable to us. How government is deriving some gain from selling house property to us. तो जीएसटी कुछ चीजों पे एप्लीकेबल नहीं है, जैसा कि अगर आप कोई लैंड परचेज करने जा रहे हैं, कोई रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, या कोई भी प्रॉपर्टी आप रीसेल में जा रहे हैं, तो आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए जो हनुमान सर ने कहा था कि अगर आपके पास में कोई रेंटल आ रहा है और आपको रेडी टू मूव इन में जाना चाहिए, तो आप ध्यान रखिए, आपको कोई भी बिल्डर आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। जीएसटी इज टोटली applicable on ongoing projects. For ongoing projects definition, जो भी प्रोजेक्ट आपके स्टार्ट हुए हैं, जैसा इन्होंने हनुमान सर ने बताया कि रेरा का आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, कौन सा ऑनगोइंग है, कौन सा रेडी टू मूव इन हो चुका है। वहाँ पे वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देते हैं रेरा के अंदर वेबसाइट के ऊपर। जब वो अपलोड करेंगे तो आप उसको चेक कर पाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन है। तो जो नॉन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है वो हेल्दियर किसके लिए हैं? वो हेल्दियर हैं ऐसा कोई भी आदमी जिसके पास में आज बजट नहीं है, या वो फ्यूचर में सोचता है कि मेरा फ्यूचर इनकम जो है होगा वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, वो आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर जा सकता है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जीएसटी का रेट्स जो है वो फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग इट इज 1%, फॉर अदर हाउसिंग इट इज 5%। इफ बिल्डर इज क्लेमिंग GST, then it is 12%. If builder is not claiming input of material purchased by him, then it is 1% for affordable or 5% for non-affordable or other housing projects. इसमें एक बात और आती है दिमाग के अंदर कि अफोर्डेबल हाउसिंग का क्राइटेरिया क्या रहेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग में हम कौन सी मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कवर किया गया है, किसको अपन टियर 2 मानेंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग का कारपेट एरिया कंसीडर किया गया है, ना कि आपका बिल्टअप और सुपर बिल्टअप एरिया। तो टोटल कारपेट एरिया ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सीड 60 स्क्वायर मीटर्स इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, एंड कारपेट एरिया ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर अदर टाउन्स एंड सिटीज इट इज 90 स्क्वायर मीटर्स। और जैसा अपन इनकम टैक्स में भी देखा कि 45 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो चीज उसमें भी जीएसटी पे भी उन्होंने एप्लीकेबल कर रखी है। सेम रूल है दोनों ही जगह, 90-60 का भी सेम रूल है, 45 का भी सेम रूल है।
मेट्रोपॉलिटन की डेफिनेशंस के जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है मेट्रोपॉलिटन सिटीज को, उसमें है दिल्ली एनसीआर इंक्लूडिंग गुड़गांव, फरीदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड मुंबई एनसीआर। मुंबई आपको महानगर बोलते हैं उधर, मुंबई महानगर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन, या ये आपके अफोर्डेबल हाउसिंग में इंक्लूड है। अब आपकी एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में मेरे पास एक जनरल क्वेश्चन एक पब्लिक का एक और आता है कि क्या सर हमारे पास हमारे बिल्डिंग के अंदर रेजिडेंशियल भी है, कॉमर्शियल भी है, तो क्या हमारा 12% लगेगा या 5% लगेगा जीएसटी? तो उसका क्वेरी है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर जो भी आपका कॉमर्शियल एक्टिविटी भी अगर गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी है और प्रोजेक्ट को स्टेटस रेजिडेंशियल का स्टेटस मिला है, तो आपका जीएसटी सिर्फ और सिर्फ 5% ही रहेगा। अगर आप इवन यू आर गोइंग टू बाय अ शॉप इन द रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टी, you have to only pay 5% of GST in that. Okay. Thank you, Anirudh ji. Thank you for this taxation explanation. It was, I hope it is a very fruitful and a very relatable one. So I'll just ask you one question, then I'll give you a breather, and let's go to Hanumanji with the additional questions. Then we can come back to you, so that Sure. audience is also prepared with their questions for you. So the only question which the audience right now is having regarding the taxation impact is, what is your take on the new tax regime? As in 2020-2021 financial year, we are being given the opportunity to have two tax regime. One, we can opt for a old tax regime. One, we can opt for a new tax regime. So are we going to get these deductions, or we are going to get these benefits in the new tax regime, or the old tax regime is better when we are considering house property as our foremost uh, option? सी होता क्या है कि जैसा आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये कहा कि सब बाकी सारे डिडक्शंस भूल के अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी डिडक्शंस कौन से हुए, बेनिफिट्स कौन से हुए? आपका एचआरए से आपको एचआरए क्लेम नहीं ले सकते, आप हाउस प्रॉपर्टी का कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, आप एटीसी का डिडक्शन जो आप अपन जनरली सब पूरा 1.5 लाख का कंप्लीट करते हैं वो आप कुछ भी नहीं ले सकते। तो ये सारी चीजें अगर अपन देखते हैं, कोई आदमी अगर 30% के टैक्स स्लैब में है तो मैं नहीं समझता कि उसको एटीसी का बेनिफिट छोड़ करके और न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहिए। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी बाय कर रहा है तो देखिए आप सीधा सीधा उसको इफेक्ट क्या आता है कि 1.5 लाख का तो एक एक उसको छोड़ना पड़ेगा, 2 लाख का उसको एक डिडक्शन छोड़ना पड़ेगा, 1.5 और 2 हो गया 3.5। और अफोर्डेबल का 1.5 लाख में वो कितना कंप्लीट कर पाता है वो एक अदर अदर इशू है। तो टोटल अगर अपन कंप्लीट उसको पैक को मानते हैं तो 1.5, 2, 3.5, 3.5 लाख का हो गया, और 3.5 और 1.5 करीब करीब 5 लाख का बेनिफिट छोड़ करके और आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भी हरकत कोई आदमी करेगा जो माइंडफुल पर्सन होगा। वो अपना अगर उसके पास में इतना बैकअप है पीछे इनकम का, तो वो डेफिनेटली डेफिनेटली नए टैक्स रिजीम में जाए, ओल्ड टैक्स रिजीम में ही जाएगा। नया टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए था जो कि अभी हाल फिलहाल कोई भी प्लान नहीं कर रहे हैं, उनका फाइनेंशियल ईयर 2021 में के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया उन्होंने, और इन दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर भी उनका कोई प्लान नहीं है। तो क्या कि गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया, बस उसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप हर ईयर अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। अगर आपका 1.5 लाख का 4 लाख का आपका बेनिफिट आपके पास में नहीं है, गो फॉर द ओल्ड रिजीम, सॉरी गो फॉर द ओल्ड न्यू न्यू रिजीम। और अगर आपके पास में ये 3.5 लाख का 5 लाख का बेनिफिट है तो आप ओल्ड रिजीम में आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you so much. Thank you, Anirudh. I'll give you a breather now. So, Hanumanji, can we come back to you? So, yeah, Sure. okay, great, yeah. So, Hanumanji, can you please highlight us a little more on the Prime Minister Awas Yojana, PMAY? It would be really helpful. Shortly. So basically, since in 2015, government has come up with the agenda housing for all. So in 2015, one scheme was launched for EWS category as well as LIG category. EWS early economic weaker section as well as low income group. Their income segment is about 0 to 6 lakhs. So what they have given as a scheme, under that, if a person who is an adult, married or unmarried, will be considered as a family. Under this person,
his income should be less than 6 lakh. He should not own a pakka house in his own name or anybody in the family name. Family, I would say कि family जो होगा एक anybody जो 18 साल से ऊपर है वो या उसकी वाइफ would be considered as a family. तो इसके अंदर इंटरेस्ट का सब्सिडी मिलता है 2.67 lakhs फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग. अफोर्डेबल हाउस में 60 स्क्वायर मीटर का घर लेना होता है, उससे कम का लेगा तो उसको, जैसे इफ ही हैज बॉट ए फ्लैट ऑफ 15 लाख का फ्लैट खरीदा और 2 लाख जेब से डाला, 13 लाख का फ्लैट उसको 13 लाख का लोन लिया, तो 13 लाख के लोन में जब भी उसकी वो सब्सिडी अप्रूव हो जाएगी तो गवर्नमेंट ने 2.67 lakhs का अमाउंट उसके लोन अकाउंट में डाल देना है. That would reduce the principal of that loan by 2.67 from 13 lakhs. That is one scheme which was announced from 2015. It is still going on. After that, in 2017, there were two additions into that scheme. One is MIG1, another is MIG2. MIG1 मतलब 6 लाख से 12 लाख की इनकम वाला आदमी, rest all criteria remain same. And house which is up to 160 square meter he can buy. That's the two differentiation in MIG1 category. MIG2 category 12 to 18 lakhs and house up to 200 square meter carpet area and 12 to 18 lakhs. So if you see 16 to 18 lakh जो भी कमा रहा है, he is in a way paying some interest, some taxation to government. So ultimately he is also gaining something from the government as a subsidy. So in MIG1 2,35,000 is the subsidy. MIG2 2,30,000 is subsidy. Thank you. Other question from the audience is, so is buying a plot a better option और एक फ्लैट खरीदना इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए? So what's your take on that? One should go to buy a plot or to buy a flat? It's a very general question. I think many of us will be having that. What should we build? Should we build our own house or get a flat? No, I think the question is about for the investment, whether to invest in plot or whether to invest in a flat. So on investment front, I would say many of people have burnt their hand by investing into flats or as well as plots also. Plots would be available majorly into tier 2, tier 3 cities. जहाँ पे किसी ने 10 लाख में खरीदा था तो आज 10 लाख कोई देने वाला नहीं है. तो liquidity is still a concern for plots also. But yes, the plot in good developing colony, कोई अच्छा कॉलोनी है जहाँ पे घर बन रहे हैं, it is not a plot का plot ही पड़ा है 4-5 साल तक. There are some price appreciation और जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा अवेलेबल है. In Jaipur also, if you see, there are colonies where you won't get plot itself. तो उसका भाव बढ़ा हुआ है. It's totally depending on the micro market कि उसका development of that surrounding, how it is happening. And in flats also, if the location is very well connected, there is a future of development or future of employment is there, वहाँ पे फिर भी भाव है जो stable है अभी भी. So rest also investment is not a right choice as of now. Thank you. I hope this answers the question. And one more question, Hanumanji. Are tier 2 cities a hotbed to invest now in property, particularly in COVID times when metros and tier 1 cities are more affected? So in COVID times, as the tier 1 cities and the metros are more affected ones. So as Anirudh also mentioned, so is it feasible to invest in tier 2 cities right now? What is your take on that? The tier 2 cities would be having lot many investment opportunities over there, but that opportunities are worthy or not, that one need to calculate accordingly. अगर आप जयपुर की बात करते हो तो lot of you, if you compare it with the tier 1 city, the tier 1 city में employment opportunities are very well available, but tier 1 cities में भी different things है. If you see, Delhi has a inventory hangover of about 6 years. आज अगर कंस्ट्रक्शन रोक देता है दिल्ली, जितना चालू है उतना ही करता है, तो 6 साल तक वो इन्वेंट्री नहीं बेच सकता है, इतने फ्लैट पड़े हैं वहाँ पे. सिमिलरली द मार्केट विच आर परफॉर्मिंग, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, वहाँ पे 1.5 साल का 2 साल का इन्वेंट्री विच इज वेरी मिनिमल. ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि टायर 2 सिटीज also having this kind of inventory hangover, as there are there are not that much employment opportunities. So buyers are very low over there and their income ratios are very low. So purchasing power capacity is not that much in tier 2 cities.
So the bad times have hit the tier twos more, but in tier one cities it has also it has not इसने ज्यादा इम्पैक्ट टायर वन में नहीं किया है फॉर फ्यू सिटीज, बट टायर वन में दिल्ली में ज्यादा इफेक्टेड है, और यू में सी कोलकाता में थोड़ा इफेक्टेड है, बट रेस्ट ऑल सिटीज आर डूइंग वेल इवन आफ्टर कोविड टाइम्स. देयर आर सिटीज जहाँ पे लास्ट ईयर से ज्यादा माल बिका है. इवन इवन सिंस अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक देयर आर सिटीज जो लास्ट ईयर से ज्यादा माल बिका है वहाँ पे फ्लैट्स बिके. Thank you. Thank you. One last question to you. So slum development projects are very tricky. How one has to be careful. The builders do not give possession on time. How do we deal for the delays? So moreover, it is related to the delay which builders do. So what's your take on that? I tell you, this is basically Mumbai based question. So slum development are happening in Mumbai only, I believe so. So how is the structure of project? I tell you, what happens if suppose 500 slums are there, they have to be rehabilitated in a particular building, and similarly there is some sell portion which is available for the builder to sell. तो उसमें क्या होता है, जैसे ही वो बेचने लगता है, उसका जो सीसी आता है बिल्डिंग का, सीसी इज डिपेंडेंट on the structure of completion structure of existing slum building. जैसे स्लम बिल्डिंग का 4 स्लैब बनाया है तो प्रोपोर्शनल बेसिस पे उसको काम करने का परमिशन मिलेगा फॉर द सेल बिल्डिंग. ठीक है. तो डिले, यस डिले, वन one thing for delay nowadays is RERA. You can definitely approach RERA court, which is quite affordable itself, and even you can also be your lawyer under RERA court, and you can get your refund if you are not interested, and you can uh, get out of the project if there are more delays. So I think RERA would be the fastest form to resolve any issue, and ज़्यादा delay है तो it's definitely hurting you, and the price appreciation is not getting up also, as well as जो पैसा लग रहा है इंटरेस्ट का वो भी आपको ज़्यादा ही लगने लग गया होगा. तो I think you should approach RERA for immediate resolution, because there would be some timeline which would be given in the agreements. Yes, अगर ज़्यादा delay है तो they need to ask, as per RERA rule, they need to ask your permission for the extension of completion date. ठीक है. So you may approach your all colleagues who have bought a particular flat under that particular project. You may form a particular opinion. Similarly, ultimately, the view would be that completion would be the key. अगर आप complete नहीं किए, आपका फ्लैट आपने भले ही 5 करोड़ में खरीदा है, उसका वैल्यू नहीं है. जब तक complete नहीं होता है, I would say कि भले ही आपका लॉस हो गया हो, मे बी 5 करोड़ में खरीदा, आज 4.5 ही हो रहे हो, और जब तक वो complete नहीं होगा, वो 4.5 भी नहीं. तो one should think in that situation about the resolution for completion of, rather than going to court and all. If you can get the money, then one of the best thing is that कि ठीक है आपको पैसा मिल गया, whatever you have invested. One But last, we have just got one more question. So that will be the last question to you. So the question is from an investment perspective. So what is the what's your take on the future in India if you wish to float your property as a service apartment through private sector provider, example Airbnb? So what's your take on that on the basis of investment perspective particularly? I would say you just need to calculate yield on that rent. So I took one example of 1 crore में किसी ने property खरीदा, the net rental is 4 lakh per year. तो अगर आप वो 1 करोड़ रुपए कहीं और FD में लगाते तो it would have gained more than that, or wherever possible you have put it. अगर आपके पास कोई old property है और उसका जो इन्वेस्टमेंट आपने ऑलरेडी एक बिल्डिंग इक्विटी बिल्ड कर लिया है, ठीक है, then it's good idea to invest under Airbnb and all, because your money is already under the asset and you can get the good revenue out of Airbnb or whatever may be the PG solution you may opt. Or long run में there are markets which are coming up, there are new industries evolving in the real estate, which is that कि you may say senior citizen housing on rentals, rental housing people. There are builders who are building the buildings and providing a service for a rental housing. एक बिल्डिंग बना लिया, 10 साल का रेंट पे आपको दे दिया, you will be like a owner for 10 years and you will be paid. Yes, that would be little bit costlier for them, but the value of these terms will build the market cap of that particular flat.
तो नया प्रॉपर्टी खरीद के एयरबीएनबी पे चढ़ाना है, दैट्स नॉट अ राइट चॉइस इन करंट सिनेरियो. Thank you, Hanumanji. That was very informative one. I'll come back to Anirudh ji. So Anirudh ji, we have a question from the audience. We have talked about Pradhan Mantri Awas Yojana here. There is a subsidy involved which the government is paying, as mentioned by Hanumanji. So is that subsidy taxable or non-taxable? See, the subsidy we receive is our part is adjusted in our loan amount. If we buy, if you take a loan of rupees 20 lakh or 25 lakh, तो सब्सिडी जो भी है उसका वो अप्रोक्सीमेटेड 2.5 लाख के आसपास का सब्सिडी मिलता है 2.5 लाख का. तो that subsidy will be adjusted in our loan amount. So it will be treated as a capital receipt, not a revenue receipt. So it is not taxable under income tax. Thank you. There is one more question, which is after that, after death, if will was not prepared, it's difficult to transfer it to a nominee. Generally, complication of a succession certificate are required. But if while a person is alive, can he transfer the property in his son's name as a gift? What is the stamp duty one has to pay on a possessed property by his son? Is the base taken property cost at the time of buying a flat or existing market value? What will be the base? It will be the DLC of that area. Stamp duty जो भी है, stamp duty will be according to the state. DLC will be the DLC rate. Stamp duty will be applicable on the DLC rate, and stamp duty rate is decided by the state government. Okay. Yeah, thank you. So one question is, during the year, me and my father purchased a house for residence as co-owners on loan and paid, let's say 4 lakh as an interest. We have 50-50 co-ownership in the house property. Can we both claim deduction for interest we paid? Yes, you can. You both are eligible for the deduction. एक्चुअली जो अगर आपका प्रॉपर्टी रेशियो सर्टेन कर रखा है आपने, लोन रेशियो एंड प्रॉपर्टी रेशियो अगर आपने सर्टेन कर रखा है, तो डेफिनेटली आप दोनों ही एलिजिबल हैं डिडक्शन लेने के लिए. बोथ विल गेट डिडक्शन ऑफ 2 lakh under section 24 and claim deduction under ETC of 1.5 lakh as a principal amount. You are eligible for both deduction. Makes sense. Yeah, thank you. So one more question. Currently, I am living in a society where I'm paying 6,000 per month as maintenance charges. Is GST applicable on that? See, if your society total receipt is more than 20 lakh, only then society has to get registered under GST. First condition is turnover of the society is 20 lakh. Second condition of that is per month maintenance charges should be more than 7,500. So since the question you are asking is not complying not satisfying the both condition, hence there is no GST applicable on that. Okay, thank you. Last question to you. So, in an under construction house, buyer suggests some modification to a builder for his flat. Whether GST is applicable, like after asking for a modification, what is your take on that? Yeah, GST is, since property is under construction, the GST is applicable on that. Same GST rate will be applicable on the modification. If the modification will be done as separately, then rate of interest is rate of GST is 18% or 12%, and if the person suggested in that particular time, then it will cost around 1% or 5%, as the case may be. Thank you so much for your valuable time. We'll conclude the session with last question to Hanumanji. I missed this question from the audience. So which type of rate is better, floating or a fixed interest rate? India is developing country. I believe rate would be ranging between 6.5 to 9 or 10 for next few years, as compared to other countries like developed countries where rate of interest is less than 2% as well. So floating, if you are getting a good fixed rate is below 7% or below 7.5, you may choose if your tenure is like the balance tenure is higher. But if you say कि भैया currently if you want to enjoy your current rate,
which is 6.7, and whenever you see कि इसमें कुछ price बढ़ने वाला है, ठीक है, and ज़्यादा ही price बढ़ने की you have expectation, that time you can convert by paying some fees to your financial institution. So in case RBI defer the interest payment under the COVID-19 moratorium, can we claim the interest as a deduction, or is it on a cash basis? Like No, when we you will get pay, a we can claim. certificate. Yeah. I'll tell you, when you deduct, when you claim it, okay, there is a certificate from the financial institution how much you have paid. ठीक है, if you are saying कि RBI ने मेरे को 6 महीने का deferment दे दिया, I want to claim that 6 months, no, you cannot. The interest certificate मिलेगा financial institution से, you have to take the claim accordingly. Okay. Thank you. I hope it answers all of our questions. It satisfies all of our doubts while buying the house property. I hope everyone will be investing their mind now what all should be the formalities or what all needs to be done in order to take up a good thought about whether to buy or to rent or whether to invest. So I'll hand over the mic to Madhusudan ji, who can just take over from here. Thank you so much, guys. It was a very good session. Thank you. थैंक यू मिस्टर शरद। मैं आप One सभी second. को बहुत बहुत One- धन्यवाद देता हूँ, विशेष तौर मधुसूदन से जी, हनुमान जी को। यस सर। एक सेकंड, वो जस्ट आई वुड लाइक Yes, टू, जो अपने जो आए हुए हैं गेस्ट में से, आई वुड लाइक टू फर्स्ट 2-3 का नाम लेना चाहता हूँ। वन इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रत्नाकर बैंक, वो आए हुए हैं, हम काफी उनका स्वागत करते हैं। करे देवर क्वाइट अपने वीरेंद्र जी CFO है लैंडमार्क से। देयर इज रश्मि दाइमा भारती जी, उनका स्वागत करता हूँ। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एक शब्द आई वुड लाइक टू टेल रिगार्डिंग बुल्लो जी। शी इज जॉइनिंग अस, शी इज द हेड ऑफ द लेडीज विंग ऑफ ऑल इंडिया। अगर शी कैन गिव जस्ट 1 minute टू अस, इट विल बी, एक बार वी वुड लाइक टू स्पीक, अगर इफ शी कैन कम फॉर 1 minute टू अस करके। बिल्लो जी आप आ सकते हैं। बिल्लू बोल रही है। बुला आंटी, आप शायद म्यूट पे हैं। हेलो, या वी कैन सुन हियर यू। सकते हैं मुझे? या आपको हाँ सुन जी, सकते हाँ हैं। जी, थैंक यू देवेश हाँ, जी, yes, बोलिए। प्रणाम Thank you. पहले सबसे पहले आपको, Thank and you, thank thank you for giving me such a privilege, and you personally invited me for this program. It was nice attending you, Thank you, and thank the you. program was really very useful, very helpful in these days. People, youngsters want to buy a house, and Hanuman he's my cousin, and he has given us Very good. Hanuman is my cousin, and he's given us a very good information regarding this house, and matlab, he's explained it very well, the pros, cons, everything. That was सही very बात। nice of him. So we should thank Hanuman also to being very clear about everything. Thank you. And सही my बोला। daughter is doing her CS. She also Oh. had joined the session, and she also has got a lot of information regarding buying a house and all. So Very I good. thank you all for this very wonderful session. We really enjoyed the session. Thank you. थैंक यू। शंकर जी, दायमा जी, 1 मिनट के लिए आप आ सकते हैं? आप वाइस प्रेसिडेंट रत्नाकर बैंक से हैं। शंकर जी, इफ यू कैन हियर मी, है क्या शंकर जी? नहीं, I can't see him. इज नॉट देयर करके। Yeah, he's not there. वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी इज आल्सो नॉट देयर। Yeah, I think they left. वीरेंद्र Yeah, Virender ji is there. Virender ji is there. I think he's on mute. वीरेंद्र जी, कैन हियर मी? आई थिंक वो उनको शायद आवाज नहीं आ रही करके। एंड अपने भारती जी इज आल्सो फ्रॉम बेंगलोर, शी इज द हेड ऑफ वन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी। भारती जी 1 सेकंड आएंगे क्या? हेलो हेलो। हाँ, या वीरेंद्र जी, वेलकम वेलकम। हाँ, सॉरी देवेश जी, आई कुडंट हियर इट प्रॉपर्ली। या नहीं, या वीरेंद्र जी एक सेकंड बाद। I think there is some disturbance in between.
Virendra ji, can you hear us? Yeah, now it's clear. Yes. Yeah, I can. yeah. Please Yeah, go ahead. Virendra. Yeah, So Virendra ji. it's a very nice articulation done by all participants, and means because Hmm. when we should look for an investment in real estate property, I think the market is down as specified by that market is really means not picking up, and it's a good time to invest. I think so. Nice. मुझे भी यही लग रहा है, जब से हनुमान जी को सुना हूं अभी मैं ये लगा हूं कि कौन सी अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढी जाए, आइदर इन बॉम्बे और इन जयपुर पॉसिबली करके. आई विल टेक हिज एडवाइस करके. भारती जी, कैन यू कम फॉर 1 second? Hello everyone. Everybody can hear me? Yeah. Yeah, it was really a nice presentation by Hanumanji and Anirudhji, and very valuable information being shared. And since we people are also looking for a home, so I would say it was really very, very informative for us. So thank you for this information. Really great. रश्मि दायमा, भरत जी व्यास से भी निवेदन करूंगा कि वो भी एक बार 1 मिनट के लिए आए. आ जाइए. श्री भरत जी व्यास, आप भी हमारे समाज के काफी कर्मठ कार्यकर्ता हैं. वेरी गुड. हाँ, भरत जी व्यास. म्यूट हाँ जी सर. हाँ सर, नमस्कार. प्लीज. हेलो. हाँ यस. हाँ सर, बोलिए सर. हाँ मधुसूदन जी, हाँ सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो. धन्यवाद सर. ये हमारे देवेश जी का काफी अच्छा ये आयोजन है, और नए नए सब्जेक्ट के ऊपर आप वेबिनार लेते हैं तो बहुत यूजफुल है. हाँ जी. तो आप निवेदन करूंगा 2 मिनट के लिए आप थोड़ा सा संबोधित करिए सर. सर किस टॉपिक पे? आप जनरल बोलिए सर. जयपुर की प्रॉपर्टी बता दीजिए आप तो. चलो ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद. ठीक है सर. तो हाँ, we have Rashmi Daima. She is the vice president of a multinational company. Rashmi, what is your take on your Bangalore? Rashmi, can you unmute yourself? Rashmi Daima. I think. Rashmi, can you hear? चलो, I think she is not there करके. हाँ, चलिए आप कंटिन्यू करिए. या मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, विशेष तौर से हनुमान जी और अनिरुद्ध जी का, जिन्होंने पूरी जानकारी हमें दी, और इस समय में इस कोविड काल के अंदर हमें प्रॉपर्टी में किस तरह से इन्वेस्ट करना और इन्वेस्ट करने में क्या फायदे होंगे और किस तरह की प्रॉपर्टी में किस तरह से नहीं करने का, इसके लिए आपने बहुत अच्छी तरह से हमें जानकारी दी. और साथ ही साथ में जो सब जुड़े हुए जो हमारे बंधुगण थे वो सब जुड़े, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ. और सफल संचालन के लिए शरद जी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद. साथ ही साथ जो हमारी जो बैक और सपोर्ट जो टेक्निकल टीम थी उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा. और विशेष तौर से इस पूरे कार्यक्रम को संयोजन करने में श्री देवेश दाधिच साहब का जो योगदान रहा वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं. इतना ही कहकर मैं अपने को वाणी में विराम देता हूँ और आप सबको शुभ सायं, शुभ रात्रि. आप सबको एक सेकंड. आई थिंक निखिल इज देयर. निखिल या प्लीज. निखिल जी प्लीज आगे निखिल जी. अरे इनकी नाइट ड्यूटी थी. कर रहा था. I was waiting from a long time when my so first of all, thanks to all of you, and a very good evening to all of you. Today I am very glad and proud to be a part of the 25th webinar of DITF, and I expect that it would reach a milestone of 50 and 100 soon. So today's topic was very interesting about the house. So a house is made of bricks and beams, but a home is made up of hopes and dreams, and it is where the memory resides, and it is created. So first of all, I would like to thank our presenter, Mr. C. Sudan Dadhich ji, and first of all, Devesh Bhaiya also. He is in relation to brother to me, elder brother to me. After that, our moderator, Mr. Sharad Sharma,
he has told very good about that roti, kapda, and makan, and it is the basic necessity of an person. After that, our panel speaker, Mr. Hanuman Asova, very well spoke by Hanuman Asova. I have noted various points from him also, like the relaxation given from the government. Like if you are switching to a place for a shorter period, so you should don't buy a house, you should rent a house. Or if you are shifting to a place where you are expecting to live for a longer period, you should buy your own house. After that, the main factors about the locations, the like school, hospitals, temples, and about the environment of the side by places, and about the vastu also. He mentioned about vastu, various offers and schemes given by the builders to the customers. So we should take benefit from them also. And last, he concluded with today there is no, in general, there is not good market for the investment purpose. So I noted various points about him. And after that, I would like to thank Mr. C. Anirudh Dadhich. He had very well explained about the taxation aspects, like the tax saving, direct and indirect taxes applicable in the properties, taking property on the name of his son, spouse, and other persons, so he can make a benefit in the taxes. About the government scheme, which like Pradhan Mantri Awas Yojana and the subsidy which are provided by the government, and different sections also he has well explained about to us, like with a good example taking in the taxation. After that, the example with the home loan and benefit of the 80C, and about the affordable housing. So it was a very good seminar, and I am very glad to be the part of the seminar. And I would like to thank our all audience also. They have supported us, and we have reached the milestone of the 25th. And with the blessings of the Dichirishi and our Devis Bhaiya, so we'll make a limestone in the future also. So I will hand over to Madhusudan ji Dadhich. Sir, thank you, sir. आपने सब मेरी बात जो थी पूरा सारांश उसका आपने कह दिया है, इसलिए मैं पूरा ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबका धन्यवाद देता हूँ, और आप इसी तरीके अगले वेबिनार में आप सब शामिल हो इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर सर, थैंक यू।